Hello everyone. So welcome back to my channel Anis Sir's Technology. So this is basically the continuation series of Java programming language. And in the last class, we have discussed about the basics architecture of the Java programming language. Okay. So I think you don't have any problem from the previous lecture. If you have any problem, please let me know. Do you have any problem from the previous lecture, Arnav? No, Okay, sir. great. So today we are going to discuss basically the data types. This is a very vital and important part of the programming language. And after that, we will proceed in the programming section. So before that, we will discuss about the data types. 1 second, please. Okay, just a moment. Session 2. In this session, we are going to discuss the data types in Java. Okay. Before entering into the data type, first of all, we have to understand what is data. Big question mark is there. What is data? Data क्या है? There are different types of data are available in our program. अलग अलग तरह का डेटा हमारे प्रोग्राम में होता है. And to manage and control these kinds of data, we required the data types. Okay, I will show you. Okay, are you all able to see the screen? Yes, sir. Okay, great. So just a moment, please. Now, I just want to write the different type of data. Then accordingly, I will tell you how to manage these data by the different data types. Okay, 1 minute, please. Okay. Now, this is the first category of data I'm going to write. 1, 2, 12, 345, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 0, 98. Please look at this kind of data. Which type of data is this? Very important part I'm going to discuss. Just 1 second, please. Okay. So the data which does not contain any fractional part, this is called integer data. Are you getting my point? This is called integer data. Look at the data. 1 is integer, 2 is integer, and each and every number is not containing any fractional part. Any fractional part. Okay. Are you all understanding? Which type of data is this? This called a integer data. तो इंटीजर डेटा को हैंडल करने के लिए जावा ने कौन कौन से डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड किए हैं. अगर हम सबसे छोटा डेटा टाइप, द स्मॉलेस्ट डेटा टाइप की बात करें जो कि अवेलेबल है जावा में, वो है बाइट, देन शॉर्ट, ओके, देन आईएनटी एंड देन लॉन्ग. There are 4 types of data are available. Data types are available to handle these kinds of data. अगर हमारा डेटा बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में है तो हम बाइट लेंगे. अगर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में है तो हम शॉर्ट लेंगे. अगर थोड़ा और मीडियम क्वांटिटी में है तो हम इंटीजर लेंगे. देन अगर हमारा डेटा बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वांटिटी में है तो हम लॉन्ग लेंगे. अंडरस्टैंड? अगर हम बाइट की बात करें, अभी हम आपको पूरा एक चार्ट बनाकर बताएंगे. यू डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल गिव यू अ कंप्लीट चार्ट. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. सो इंटीजर डेटा को हैंडल करने के लिए जावा हैज प्रोवाइडेड द 4 डेटा टाइप्स according to the quantity or according to the length of the data. We can choose different types of data types. Now what about this? 1 second please. This is called
fractional data. This called, which type of data is this? Please answer. Which type of data is this? This is Fractional called data. a fractional data. कैसे पहचाना हमने कि this is a fractional data? Because each every data has some fractional part. Are you getting my point? Have some fractional part. तो इस टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए जावा ने हमें दो तरह के डेटा टाइप्स दिए हैं, फ्लोट, डबल. ऑलराइट, अगर हमें फ्रैक्शनल डेटा को हैंडल करना है तो उसके लिए फ्लोट एंड डबल. अगर इंटीजर टाइप के डेटा को हैंडल करना है तो उसके लिए बाइट, शॉर्ट, आईएनटी एंड लॉन्ग. अब इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा टाइप कौन सा है? आईएनटी और लॉन्ग. ज्यादातर हम इन दो डेटा टाइप को यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? इन दो डेटा टाइप को हम लोग यूज करते हैं. बाइट एंड शॉर्ट नेवर यूज्ड, बहुत ही रेयरली यूज होता है. ठीक है, हो सकता है हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए और हमें बाइट और शॉर्ट की जरूरत ना पड़े. बट इंटीजर एंड लॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल फ्रिक्वेंटली यूज्ड. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड कैटेगरी? This is the first category. This is the second category. Now what about the third category? अगर आपका डेटा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहते हैं बूलियन टाइप ऑफ डेटा. क्या कहते हैं भैया? बूलियन टाइप. Boolean means either it will be true or false. Now I'm just going to discuss the fourth category of data. Okay. I'm just data and data types. Okay. 1 minute, please. All right. Now, this is all done. What about this kind of data? India, Lucknow, Java, Ram. Okay, good. Which type of data is this? This is called string data. Understand? This is called a string. अगर हमें इस तरह का डेटा हैंडल करना है तो उसके लिए हमको स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा. कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज बेसिकली यूज्ड टू हैंडल द डेटा व्हिच इज रिलेटेड टू द स्ट्रिंग टाइप. स्ट्रिंग मींस आपका कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. स्ट्रिंग की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है. एनीथिंग enclosed within double inverted commas will be treated as string. कोई भी चीज अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास में आ जाए तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मोमेंट, फॉर एग्जाम्पल, ओके प्लीज, द एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास आई एम राइटिंग 1 2 3 4. अगर देखा जाए तो 1 2 2 3 या ये एक तरह का इंटीजर डेटा है 1 2 3 4, बट this data is coming inside the double inverted commas, so it will be treated as a string. Okay. Suppose हम double inverted commas में a को ले लेते हैं. So this a is coming between the double inverted commas, so it will be treated as a string. Okay, 1 second. Suppose I am writing like hash, @ hash, $sign, %sign. These are basically the special characters. Okay, so these special characters are coming between the double inverted commas, so it will be treated as a string. So anything is coming double inverted commas, if anything is coming between the double inverted commas, will be treated as a string. Okay, 1 second please. Okay, now what about the fifth category? Just a moment. Okay, suppose if we talk about single inverted commas, if anything is coming between single inverted commas, now you can see
if anything is coming between single inverted commas will be treated as character, will be treated as character. Okay, all right. Okay, if anything coming between single inverted commas will be treated as character. Understand? Okay, 1 minute. तो इसके लिए जो जावा में डेटा टाइप अवेलेबल है वो है char. Understand? So can you please identify these kinds of data? और इन डेटा को हैंडल करने के लिए there are different types of data types. All right, 1 minute. Okay, after every topic I just wait for 5 minutes. Oh, wait for few seconds. Okay, understand? Okay, please look at the screen, and do you have any problems? So please let me know. Should I explain once more? No, sir. Arnav? No, sir. Okay. So, which type of data is this? Which type of data is this? This is called the integer data. Integer data को handle करने के लिए जावा ने 4 डेटा टाइप्स दिए हैं, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग. बट सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं आईएनटी और लॉन्ग को. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ डेटा? दिस कॉल्ड द फ्रैक्शनल डेटा. और फ्रैक्शनल डेटा को हैंडल करने के लिए जावा ने हमको 2 डेटा टाइप्स दिए हैं, फ्लोट एंड डबल. ऑलराइट, अगर कहीं पर ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यूज को हमें हैंडल और कंट्रोल करना है तो उसके लिए जावा ने हमको बूलियन डेटा टाइप दिया है. स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए जावा ने स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया है, एंड कैरेक्टर्स के लिए जावा ने कैर दिया है. सो होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर. इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Now 1 second. How many data types are available? Okay, now my second question is that very important, how many data types are available in Java? Okay, actually data types in Java are categorized into 2 parts. Divided into 2 category. The number 1 is primitive data types. The number 2 is reference data types. Understand? The primitive data types are those data types which comes as a part of language. जब भी कोई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती है तो उस लैंग्वेज का पार्ट बन के जो डेटा टाइप्स आते हैं उन्हें हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं. तो हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन जावा एंड हाउ मेनी रेफरेंस डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन जावा? ओके, इफ यू टॉक अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, there are 8 primitive data types are available in Java. How many? 8 primitives. Okay, we will see one by one. Okay, 1 second. Just I want to write over here. 1 minute, please. 1 second. Very important part I'm going to discuss. Okay. Primitive. Primitive data types. Okay. Number 1. Okay. The sequence is very, very important. Just a moment. I'm just telling a very important sequence to all of you. Only 1 second, please. Okay. Subset smaller. If you talk about the smaller data types, that's a byte.
बाइट मीन्स, अब यहां पर हम लिखते हैं इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी। ओके, बाइट बेसिकली ऑक्यूपाइड 1 बाइट, यहां पर हम लिखते हैं कैपेसिटी इन बाइट्स। ओके, 1। ओके, if you talk about the bytes, byte basically the capacity of the byte is 1 byte, and you know that what is kilogram? Okay, can you please tell me what is kilogram? Kg, what is kg? Please answer, what is kg? Kilogram? 1000 gram is equal to 1 kilogram. हम बहुत डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, I don't want to ask anything in detail. What is kg? Kg is a unit, kilogram is a unit, and for the measurement purpose we use. And what about liter? Liter is also a unit, huh? Yes, sir. When we talk about any liquid things, then basically this liquid thing is measured in the liters and the solid thing is measured in the kilogram. One second, please make yourself mute. Okay, and similarly the data is measured in the computer. The unit of the data in the computer is bits and bytes. Okay, not bits and bytes. Bits and bytes are the initial, but after that some more are there, but the basic unit of in the computer of the data is bits and bytes. So just want to tell you, 1 byte is equal to 8 bits. Okay, now what are the bits? 0 1 0 1 0 1. Okay, this is basically the bits, small bits. And the data, when the computer understand only the data which is in the form of zeros or 1, from the very basic point of view I am telling you. Okay, so data is in the form of zeros and 1. Basically the computer understand only data in the form of zeros and 1, and these 1 2 3 4 5 6 7 and one more, we can say that 8 bits, consecutive 8 bits are called 1 byte. So byte, the capacity of the byte is 1 byte. Understand? Now number 2, byte के बाद आता है short. The capacity of the short is 2 byte. All right? Okay, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे इन डेटा टाइप्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. नंबर 3, INT occupied the 4 byte. Occupied the 4 byte. 1 second, please. I want to highlight this one also. Okay. Now, after that, number 4. Okay, I have told you there are 4 data types. There are 8 primitive data types. 1 second. Okay. Byte, short, INT, then long. What is the long? 8 bytes. Just आपको इनको डबल करते रहना है. 8 bytes. Understand? Now after that, 5th one is float. Float is also occupied 4 byte. 6th one, double. Double occupied 8 byte. And 7th one is char. Char 2 byte. Understand? Now the 8th one is Boolean. It takes 1 byte. Okay. The size of the Boolean varies, depends upon the architecture of the Java. Okay, fine. So this is basically all the primitive data types. So how many primitive data types are there? How many primitive data types are there? 8 primitive data types are there. Understand? 8. And these are the capacity. So according to the nature of the data, we can choose the capacity. Understand? So please look at this. Please look at this properly. Now, how much data byte can store? This is the capacity, but what is the data range? How much big data can byte store? Just a moment. I want to tell you. It's a very important chart I am going to draw. Minus
128 2 plus 127. All right, please, very important discussion I'm going to do. Very important discussion I'm going to do. Just a moment, please. Okay, actually it's not accepting. Just a moment, please. 1 second, please. 1 second, please. 1 second. Only 1 second. Actually, some mathematical equation is not accepting format cell. Okay. Minus 128 to all right. Do you understand? Do you understand? अगर हम बाइट की बात करें Yes, sir. तो बाइट में माइनस निगेटिव में 128 आप स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप पॉजिटिव में आए तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो प्लस 127 है। इतना बड़ा डेटा आप बाइट में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि सपोज यू वांट टू स्टोर 129, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। सपोज यू वांट टू स्टोर 129, सो दैट कैन नॉट बी स्टोर इन बाइट, देन यू हैव टू गो विद द नेक्स्ट हायर लेवल, दैट इज अ बाइट। अंडरस्टैंड? तो बाइट की भी अपनी एक कैपेसिटी है। तो बाइट की कैपेसिटी क्या है, शॉर्ट की क्या कैपेसिटी है वो भी हम बता देते हैं आपको। माइनस 32768 2 प्लस 32767। अंडरस्टैंड? प्लीज इस रेंज को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस एक आइडिया देने के लिए मैं लिख रहा हूं। अगर आप याद कर लेते हैं तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है, कुछ आप याद कर लें, ठीक है। अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शॉर्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में मिनिमम और मैक्सिमम कितना बड़ा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉलर रेंज इन द शॉर्ट एंड दिस इज द हायर रेंज ऑफ द शॉर्ट। दिस आर बेसिक फंडामेंटल थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। नाउ व्हाट अबाउट इंटीजर? अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर की अगर हम बात करें तो -2147483648 2 plus 2147483647. Understand? Okay, this is the capacity of integer. मतलब this much data we can store in the integer. अगर हम इतना बड़ा डेटा, इस रेंज का डेटा स्टोर करना चाहें तो हम इंटीजर डेटा टाइप की तरफ मूव करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट अबाउट द लॉन्ग? लॉन्ग के लिए भी हम आपको लिखवा देते हैं कि लॉन्ग में क्या होता है, ठीक है। -92233670852 plus 922336854775880 और जो ऊपर का नंबर है उससे एक कम 7। That's it. Understand? 1 second please. बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये रेंजेस याद नहीं भी होती हैं
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए हमने आपको ये रेंजेस लिखवा दी। आर यू ऑल विथ मी? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, Yes, sir. इससे आपको ये आइडिया मिल गया कि कितना बड़ा नंबर बाइट में स्टोर हो सकता है मिनिमम टू मैक्सिमम, और कितना बड़ा नंबर आपका शॉर्ट में स्टोर हो सकता है, व्हाट एग्जैक्टली द रेंज ऑफ द शॉर्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली द रेंज ऑफ आईएनटी एंड व्हाट एग्जैक्टली द रेंज ऑफ लॉन्ग। ओके, hope you understand, hope you understand. Okay, now can we go to the next level? Okay, Yes, sir. so how many data types are available? There are 8 primitive data types are available. Now what about the second category, reference data type? Reference data type number 1 is class, array, interface. These 3 are basically called the reference data type. Reference data types are those data types which we can construct or which we can make by the primitive data types. अगर हम string की बात करें तो string basically comes under the class because string is a class in Java. Java में string is a class. So basically string comes under a reference data type under the category of class. Understand? Array we will discuss it later. Interface आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है. Okay, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे तो हायर क्लास के लिए. Okay, तो this much is completed. Understand? Okay, now this is basically all done. Okay, now we can move towards the questions. I have already given some questions for the home practice and assignments. Hope you all have done. Okay, today I am going to discuss one more question. Still, we have not discussed about the input. We are just taking the directly data. But in the next lecture, most probably we will discuss about the how to take the input from the user. Okay, so just immediately I am going to start the BlueJ. This is the BlueJ, and theoretical part is over of the today's session. Now we can start and do some programming practice. So basically, I'm just making the another class demo2. Click on OK. Now, fine. This is the BlueJ environment in which we basically write our code. Control A. Control A means select all and delete. I don't want these predefined codes. I want to start the coding from the scratch or zero level. Class. The name of the class must be the same as the file name. Okay. Public static void main. Now for a short revision or recap, can you please tell me why we start the programming in the class? Can you please answer? Whenever we start the programming in the Java, why we define the class? Why we define the class? Because the Java is purely object-oriented programming language. So without making the class, we cannot start the program. Because class is the main principle of object-oriented programming paradigm. All right, please clear to all of you. Can you please respond? Yes, sir. And after, Yes, sir. after the class, how the class will be identified? आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे? आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे? हम कैसे आइडेंटिफाई होंगे? आपका कॉलेज कैसे आइडेंटिफाई होगा? By the Identity. name. By the name. So whenever we define the class, it is always followed by the class name. Without class name, we cannot declare or define the class. Okay. Now the second most important thing is that main. Main is a function. It is the main execution point of your program. The compiler first of all search where is the main. If the compiler will not find the main, your program will not execute. And your program will not execute, so your program will not provide any kind of result. Okay, now my question is that write a program to take radius and print area and circumference
of circle. Can you please, what is the formula of area? The formula of the area is pi r square. You know, the mathematical formula is pi r square. Yes. 1 second, please. I want to write one thing very important. Pi r square. But what is the problem with the computer or Java? The Java does not understand what is pi. Java does not recognize what is pi. So this is basically the mathematical formula. Yes. But we have to write this formula according to the Java compatible. This is the math formula. Yes. Okay. So we have to write this formula according to Java compatibility. So what is the Java compatibility? 1 second. 22/7. Okay. Area is equal to, the computer does not, the Java does not understand the pi. So Java does 20. understand 3.14. It is a standard value of pi. It is the standard Yes. value of pi. Pi. And r square, how to write r square in the Java? R multiply. R into R. R multiply. Now what about circumference is equal to 2 2 pi R. 2 pi R. 2 pi r. So how to write in basically Java? Java में कैसे लिखेंगे इसको हम? 2 into 3.14 into R value. 2 into, very good, 3.14 into r. Understand? So still Yes, I'm sir. not taking any input from the user. That we will discuss in the next couple of days. So INTR is equal to, I've taken 2 as a radius. Now we have to calculate the area and circumference. Now you can see, you have to clearly, one thing you have to observe, the value of the pi is 3.14 and the r may be of any, but 3.14 is there. So overall answer will be prepared in the fractional. Are you getting my point? तो जो आपका पूरा आंसर बनेगा वो फ्रैक्शनल में बनेगा. और फ्रैक्शनल डेटा को हैंडल करने के लिए कौन से डेटा टाइप हम यूज करते हैं? फ्लोट और डबल. Float. Double. Double. और डबल. अर्नो, आर यू अंडरस्टैंड? फ्लोट और डबल. तो अगर फ्लोट Yes, sir. हमारे पास चॉइस हो तो हम डबल को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि डबल को यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है. वो अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है. जस्ट अ मोमेंट. तो अभी हम यहां पर ले लेते हैं डबल एरिया कॉमा सरकम. सरकम मीन्स सरकमफ्रेंस. ओके. So now what we have to write, area is equal to pi r square. So 3.14 into r into r. Done. And circum is equal to 2 into 3.14 into r. All right. Can you please confirm? Okay. Now Yes, sir. Yes, sir. Yes. we have to display. देखो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली 3 मोड पे चलता है. इनपुट, and the second one is process, and the third one is output. Understand? Dad, what are you doing? Right now I am not taking the input from the user, but in this program there are some input. Okay, there are some input. Okay, so what is the input? This is input. Please, I am discussing very important line. This is input. Can you please confirm? Yes, sir. Yes, sir. Now what is processing? This one is processing. We can say our data is processed. Process का मतलब होता है कुछ रिजल्ट प्रिपेयर्ड करना. जैसे हम कॉलेज में एग्जाम देते हैं तो जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो इनपुट है. हमारी कॉपीज इवैल्यूएट होकर रिजल्ट प्रिपेयर्ड हो रहा है, वो प्रोसेस है. जब हमारा रिजल्ट आउट हो गया, नोटिस बोर्ड पे आ गया, पेपर में आ गया, इंटरनेट पे आ गया, तो वो आउटपुट है. प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग.
So here I just want to write area is equal to plus. Where is the area? This is area. Yeah. And system dot out dot print. Circumference plus Circum. all right, understand? Yes. I don't think so Yes. कि कोई इसमें error होनी ही नहीं चाहिए. Wait, Okay. Variable circum. where is pens? Okay, okay. अरे, There is a mistake actually. wait. पता पेंसिल कहाँ है? There is actually a spelling mistake. CIRCUM. CUM. All right. Again, I am just compiling the code. Now you can see that there is no error. Okay. Yes, sir. Can we please execute? Just a moment. For execution, I just want to close this programming window. 1 minute, please. Okay, 1 second. And right click and wide main. With me. Okay. This is area. This is circumference. All right. All right, please. Okay. Yes, sir. Please. I want to display in the two separate lines. Then ln we have to use. Again, I'm compiling. One thing you have to understand, suppose you want to do any kind of changes in the program. Then after that you have to recompile your program. आपको हर बार changes करने के बाद अपने program को recompile करना पड़ता है. Closing and running again. All right. Now the output is coming in the two different lines. Hope you all understand. Hope you all understand. Yes, sir. Okay. Suppose I want to change the value. 5, no problem. So अगर हम input change करते हैं, तो definitely processing will be changed because the processing depends upon the input. If the processing will be changed, then output will be changed. Are you getting? Just a moment, please. Now, please look at the different answer. Okay, look at the different answer. 78.5 is the area and circumference is 331. Okay, the question is done. Okay. Now I'm going to take a next question. Now in this basically there is a restriction that every time we have to change this in the program. But after 1 day we will take this input from the user. For taking the input from the user, we required some Java predefined classes. How many classes are provide the facility of input? The scanner class will provide the facility of input. Buffer reader will provide the facility of input. Take a data input stream reader will provide. So I will tell you, explaining each and everything. You don't worry.